Assalamu alaikum students. For today's lecture, I have picked up the first lesson from your textbook. That is The Dying Sun. This is a scientific essay and it has been written by Sir James Jeans. Here the question arises, why has he used the word dying for the sun? Well, it's because the scientists believe that our sun is consuming its heat and energy day by day. And eventually, there will be a time when it will have consumed all its heat and energy, and then it will come to a standstill, means it would die. इसीलिए उन्होंने यहाँ पे सूरज के लिए फना होते हुए सूरज, टूटते फूटते सूरज या डूबते हुए सूरज का लफ्ज़ इस्तेमाल किया है. Now let me talk about the author first so that you can have an idea about him. Like I told you, the lesson has been written by Sir James Jeans. He was born in 1877 and he died in 1946. Sir James Jeans was an English physicist, astronomer and mathematician. Astronomer is a scientist who studies about the stars, the planets and the universe around us. Sir James was the author of certain famous books, like he wrote The Stars in Their Course, The Universe Around Us, Through Space and Time. Another very well-known book of Sir James was The New Background of Science. And he also wrote a very well-known book of astronomy, The Mysterious Universe. This lesson under discussion, The Dying Sun, has in fact been taken from his famous book, The Mysterious Universe. यानी The Dying Sun सर जेम्स की इस बुक द मिस्टीरियस यूनिवर्स का एक चैप्टर था. Now after this, I want to discuss some of the important points that Sir James has talked about in this essay. In the beginning of the essay, first of all, Sir James gives us an idea about the size of the stars. And he tells us how big a star can be. Then he also tells us the number of the stars. Through the help of an example, he clarifies how many stars are there in the universe. And then he also talks about the movement of the stars. Then he presents his theory of creation of the earth. यहाँ उन्होंने हमें ये बताया कि हमारी ज़मीन किस तरह से इस कायनात का हिस्सा बनी थी. ये वही थ्योरी है जिसको साइंटिस्ट बिग बैंग थ्योरी का नाम देते हैं. Later in the essay, Sir James talks about beginning of life on this planet Earth. ये एक बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है जहाँ पे सर जेम्स ने हमें ये बताया कि वंस ज़मीन वजूद में आ गई थी तो फिर उसके ऊपर ज़िंदगी कैसे शुरू हुई. जब हम ज़मीन पे ज़िंदगी की शुरुआत की बात करते हैं तो यहाँ पे साइंटिस्ट ने डिफरेंट थेरीज दी एंड इवन फ्रॉम द रिलीजियस परस्पेक्टिव मुख्तलिफ मज़ाहिब ने मुख्तलिफ अकायद पेश किए हैं थेरी ऑफ बिगिनिंग ऑफ लाइफ के बारे में. जब हम सर जेम्स की थ्योरी ऑफ बिगिनिंग ऑफ लाइफ को लेसन में स्टडी करेंगे तो हम कुरानिक कॉन्सेप्ट ऑफ लाइफ को भी टच अपॉन करेंगे. इन द लेटर पार्ट ऑफ द एसे सर जेम्स डिस्कसेस द यूनिवर्स एंड ही टेल्स अस दैट द यूनिवर्स वी लिव इन इज रियली वेरी फ्राइटनिंग. द वर्ड फ्राइटनिंग मीन्स समथिंग दैट बिकम्स ए कॉज ऑफ फियर, हॉरिफाइंग, टेरिफाइंग, खौफजदा कर देने वाली. तो सर जेम्स का ये ख्याल है कि ये यूनिवर्स जिस पे हम रहते हैं इसके अंदर कुछ ऐसे फैक्ट्स, ऐसे हकाइक मौजूद हैं जिनको जान के हम खौफजदा हो जाते हैं. वेल स्टूडेंट्स, टुवर्ड्स द एंड ऑफ द एसे सर जेम्स ने ये आइडिया प्रेजेंट किया है कि जिस तरह की ह्यूमन लाइफ प्लैनेट अर्थ के ऊपर मौजूद है वो इस बहुत बड़ी और फैली हुई यूनिवर्स में और कहीं पे भी मौजूद नहीं है और ना ही उसके साइंस मौजूद हैं. सो ही टेल्स अस दैट देयर इज़ एब्सेंस ऑफ साइंस ऑफ लाइफ इन द एंटायर यूनिवर्स. सो यहाँ पे मैंने आपको लेसन के मेन पॉइंट्स को समराइज करके बता दिया है एंड दैट्स ऑल फॉर टुडेज लेक्चर. In the next lecture, I will start with the first paragraph from the lesson and we will read the entire lesson thoroughly. Till then, Allah Hafiz.